यहाँ से चलेंगे तो 2 घंटा दिखा रहा है यहाँ से भी, और अराइवल टाइम है 23:12 पे। हम लोग वहाँ से चले थे करीब 5 बजे। पेट्रोल हवा डलवाते हुए सब थोड़ा लेट हो गया। अभी डिनर कर लिए हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है भाई? ओए मेरा फ़ोन किधर गया? अभी टाइम हो रहा है 10। खाना खाने के बाद अभी हम लोग आए हैं मद्रास फिल्टर कैफ़े। पहुँचे 12:08 पे और चेकिंग कर लिए हैं ट्रिबोट रेंट्स में। वैसे तो हम लोगों ने इस बार नाइट ड्राइविंग की, अच्छा एक्सपीरियंस था। हाईवे काफ़ी अच्छा है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड छोड़ने के बाद थोड़ा सा पैच अराउंड 5 किलोमीटर का थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उसके बाद काफ़ी अच्छी रोड है। नेशनल हाईवे 65 पे डिवाइडर रोड है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिवाइडर के बीच में पेड़ लगे हुए हैं, तो मुझे हाई बीम लाइट से उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बोलूँगा चलो फिर सुबह 7:30-8 o'clock बीच में निकलते हैं, ठीक है? चलो भाई, गुड नाइट। लाले गुड मॉर्निंग। देखो अगली पार्टी क्या कर रही है। नॉक नॉक। रेडी बच्चे? मॉर्निंग। चले हीरो। आ गए भाई अपन हरिता रिजॉर्ट। फाइनली बहुत टाइम की प्लानिंग के बाद मैं डिंडी आया हूँ, ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन विलेज। काफ़ी अच्छा लोकेशन है। इधर से आकर के आपको दिस इज़ द रिजॉर्ट। ये रहा RVR सरोवर और वो रहा हरिता रिजॉर्ट। यहाँ पे फैसिलिटीज़ में सब कुछ है। चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, रिवर साइड भी है यहीं पे। सो विल सी लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। बोटिंग भी यहीं से स्टार्ट होती है। क्या हो रहा है जी? पूरे हॉस्टल वाली फील आती है यार।
पार्क जस्ट अपोजिट में रिवर व्यू, सो इट्स फैंटास्टिक, इट्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पे टिकट बुकिंग काउंटर, मेक श्योर यू कैरी द कैश, दे डोंट हैव जीपे। और यहीं से बोटिंग स्टार्ट होती है। अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं था हाउस बोट, अभी जस्ट आया है, एक फैमिली बुकिंग है। सो कॉस्टिंग इज़ अराउंड 15,000 फॉर 24 आवर, और 1 घंटे का कुछ 6,000 है, नहीं सॉरी 1 घंटे का 8,000। एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है। दिस इज़ द बोट। अगर 15 मिनट के लिए चाहिए तो इट इज़ 120 रुपीज़ पर हेड। Peruru is a historic and heritage village in Konaseema district of Andhra Pradesh. It has a very rich cultural and traditional history of more than 1,000 years. The beauty of this village is even though everything has changed over the years, the village infrastructure, or for example the appearance, has not changed much over the centuries. The houses north facing or south facing, due to the fact that we have southwest monsoon, and to get the nice breeze in this hot and humid climate, the houses were built north-south direction. There will be 5 houses between each streets. It's called the Panchakam. All the houses typically have a central courtyard and then 4 doors in the 4 cardinal directions. This is mainly for ventilation and also appropriate lighting. And the walls are typically like 18-inch to 24-inch thick, built with mud. They provide good thermal insulation, warm during winter, and it keeps cool during summers. The story goes like this. The great Tamil king Rajendra Cholan gave his daughter Princess Ammanga Devi in marriage to the great Vengi Chalukya king Rajaraja Narendra, who is the ruler of this region, with his capital in Rajamahendravaram, or the present day Rajahmundry. After the marriage is performed, when the bride came here to the husband's place, along with her, some Brahmin families also migrated from the Tamil Nadu region, from the Kaveri banks to Godavari banks here. It has 2 beautiful temples which are more than 800 years old. The rituals in the temple are exactly the same as they were years ago, centuries ago.
stopping by in Peruru.